Hi everyone. Good morning, good evening, good afternoon, whatever the time it is. I hope you all are well and good. So in the last video, we have learned about record level security. What is record level security? How to implement it? And in this video, we'll be discussing about two other topics of record level security. That how we can implement this, like OWD, then again sharing settings, role hierarchy, and then the sharing rules and then manual sharing, right? So those were the four, and we'll be discussing two in this video and two in the next video. Okay, so yeah, let's continue. So in the last one, we discussed about different types of access levels in record level security. So what are those? So the first one is public read write, and another is public read only, and the third one is private. So in private, no one will be able to view or edit the records, even if they have access to their profiles. In public read only, all the users will be able to view the records if they have access to the object. And in public read write, all the users who have access to the object in their profile will be able to view and edit the records. What does all these three mean? I hope you understood by the definition. If not, we'll be proceeding next to see what it is with the help of an example. So basically, this is a basic map from which you can understand. Like if anyone asks that a user is there and all the records of the user should not be accessed, should be only accessed by the user. There are multiples of users, and only the owner should be able to access their records, not any other person. So what we can set the OWD to? So we can set it to private. Okay. उसके बाद any instance which a user can read as well as edit. So what does it mean? Like if there are a couple of records and one wants that a group of users should read as well as edit. So what on which setting we can put the OWT to? So the answer will be public read write. And if we want that the users can only read the records so owned by another person or a user, so what we can set it to? We can set it to public read only. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्राइवेट है तो आप सिर्फ मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई और आपके रिकॉर्ड्स ना देख सके, तो आप ओडब्ल्यूडी सेटिंग्स को प्राइवेट पे रखोगे। अगर आप चाहते हो कि देख तो सके कुछ यूजर्स, बट सिर्फ पढ़ सके या सिर्फ देख ही सके, उसको कोई छेड़छाड़ ना करे, सो आप उसको पब्लिक रीड ओनली पर रखोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं एडिट भी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस, तो यू विल कीप इट टू पब्लिक रीड राइट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट आता है रोल हायरार्की। ठीक है, तो रोल हायरार्की क्या होता है? जैसे इन कंपनी और इन स्कूल, आपको पता ही है कि पहले प्रिंसिपल, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, फिर सीनियर टीचर्स, फिर टीचर्स। ठीक है, तो एक कंपनी में जैसे सीईओ, वीपी ऑफ सेल्स, वीपी ऑफ मार्केटिंग, वीपी ऑफ लाइक चीफ टेक्निकल ऑफिसर, समथिंग लाइक दैट। ओके, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव आर द बेस लाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो रोल हायरार्की में क्या होता है कि whenever there is an option of grant access using role hierarchy, अब keep in mind that it is always checked for standard objects, जैसे कि अकाउंट हो गया, कॉन्टेक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, एक्सेट्रा। बट अगर आपका कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है, देन यू विल गेट एन ऑप्शन टू अनचेक इट। अब उससे क्या होता है? रोल हायरार्की में बेसिकली हम यही देखते हैं कि जैसे आपको पता ही होगा कि अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या कर चुके हो, तो आपके जो सीनियर होंगे वो आपका डेटा एक्सेस कर सकते होंगे, लेकिन आपके सीनियर के जो कलीग्स होंगे या मेट्स होंगे, वो एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। और फिर उनका सीनियर जो होगा वो डेटा एक्सेस कर सकता है सभी का। ठीक है, सो तो रोल हायरार्की अगर अनचेक होगा तो क्या होगा कि इसका डेटा, जैसे ये यूजर है, सो इसका डेटा ये वीपी एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसका डेटा सीईओ एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट क्योंकि चेक रहता है, सो जो एक्सेस, जो भी इसका डेटा है और जो एक्सेस है इसको उस डेटा पे, मींस द एक्सेस विच दिस यूजर
or executive one, you say, has on the record, the same access will the VP will also have on the records of this user. Okay, and he will also be able to see as well as with all the access which this user have. But the VP of marketing will not be able to see the records of VP of sales. Okay, और सेम थिंग कि वीपी ऑफ सेल्स भी अपने नीचे वाले सारे एग्जीक्यूटिव्स के records check कर पाएगा. He'll be able to access it, and CEO will be able to access all the data of VP of marketing, VP of sales, and all the executives under them. So this is how role hierarchy works. Now, uh, okay, this is it for now. But इसको org में कहाँ सर्च करते हैं? So let me show you. I'll show you. देखो, जैसे आप सेटअप पे आए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ आओगे शेयरिंग सेटिंग्स पे. ओके, सो विल गो टू शेयरिंग सेटिंग्स. एंड यस, रिमेंबर, जब भी आपको सेटअप पे जाना हो, अगर आप ने कोई ऐप ओपन कर रखा है किसी ऐप पर, जैसे सेल्स पे, तो यहाँ इस पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद सेटअप पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ आ सकते हो. ओके, याद रखो. नाउ शेयरिंग सेटिंग्स पे गए, एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट. And now for any object, like you can see lead, account, contact, order, contact, opportunity case, etc, etc, etc. So if you want, you can just change it to public read only, public read write, according to the need of the business. Now see, uh, grant access using hierarchies is checked for all the standard objects, but this one is the custom object, and for this there is an option available कि we can uncheck this, right? But for the time being we'll keep it checked. So आप यहाँ से change कर सकते हो, and accordingly अगर private है, so जो जिनका data है उन्हीं को दिखेगा. If public read only, then all the users having access to the object will be able to read the data, and public read write, they will also be able to edit the data. ठीक है? Now, after this, we'll be moving to role hierarchy wala part. So you will click on roles. Now, so we'll click on here, setup rules. So here, what happens here is you can see that CEO is at a higher level. उसके बाद फिर CFO होता है. CFO है, देखो आप इसको क्लिक करोगे, then you can see different roles under CFO. Then SVP of human resource. Okay. So इसके अंदर जैसे ये हेड हो गया मैनेजर, देन इसके अंदर हो गया इसके बाकी के जो भी सब रोल्स है वो असाइंड. ओके, तो जैसे अब अगर मैं कहूँ, ये लो, अगर ये रोल मुझे किसी को असाइन करना है. ओके, सो व्हाट आई डू, I'll click on assign. I'll choose here all unassigned users, or I'll choose and after that I'll choose any of the user which I want to assign this role to, और फिर वो ऐड हो जाएगा. ओके, तो जब भी जैसे सीईओ है या फिर एसवीपी मार्केटिंग सर्विस सपोर्ट है, तो इसके अंडर जो भी होंगे ना, तो उसका डेटा ये जो पोजीशन पे बैठा रहेगा एसवीपी, ही विल बी एबल टू एक्सेस, बट दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द डेटा ऑफ एसवीपी, राइट? एंड एसवीपी का जो भी डेटा होगा, दैट सीईओ विल बी एबल टू एक्सेस, बट एसवीपी अपने सबऑर्डिनेट, मतलब जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं जो साथ में काम करते हैं, सेम पोजीशन पे अगर होंगे, देन ही विल नॉट बी एबल टू एक्सेस, और उसके नीचे जो नहीं है, देन ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दोज एग्जीक्यूटिव डेटा. उसके नीचे जो है सिर्फ उन्हीं का कर पाएगा, एंड खुद का कर पाएगा, obviously. So this is it for today. In the next video, I'll be discussing more about the other two parts, like sharing rules and manual sharing in brief. So thanks for watching, and have a good day. Take care. Bye bye.